हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला लिया गया সেয়েহে যেহেতু অসমত কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, সেয়ে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তেখেতসকলৰ মে' মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে দৰমহাৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি পাব। আনহাতে জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল 4 মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলে তেখেতসকলৰ চলিত এপ্ৰিল মাহতে দৰমহা বৃদ্ধি পাব আৰু তেখেতসকলে 3 মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব। অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলে 4 মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব। সেয়েহে আপোনালোকৰ প্ৰতি শেহতীয়া খবৰ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।